गुड इवनिंग पिला माने माही सीएचएस क्लास समस्त को स्वागत करछि पिला माने इनफॉरमेशन ट्रांसफर केमती करा जाय तार मीनिंग टा कोन देख इनफॉरमेशन ट्रांसफर करबा ओके तेणु प्लस टू बोर्ड परीक्षा जो मान दौरान एवं समस्त जो माने भी इच्छा करुँच पाई चार्ट को केमती माने इनफॉरमेशन को ट्रांसफर करहब कि माने टेबल को कि डायग्राम को केमिति ट्रांसफर करहब ओके तेणु इनफॉरमेशन टाक ट्रांसफर करके गोटे पाराग्राफ लिख देख क्वेश्चन केमती देछि मु तुमको आज दीटा पढ़ेदेवी गोटे पाई चार्ट देवी आ गोटे टेबल पढ़ीदेवा आम समस्त मिसिकी पढ़ा ठीक अच्छे देख कौन अच्छी प्रश्न ओके लिखाई द चार्ट बिलो shows the number of students कौन देखी ना shows the number of students okay number of students enrolled on the civil engineering and electronics courses of an engineering college ओके गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी ओके से इंजीनियरिंग कॉलेज रे पिला माने एनरोल करचंती नाम एनरोल करचंती सिविल इंजीनियरिंग रे एनरोल करचंती ना ओके ना लिखैचंती आउ इलेक्ट्रॉनिक्स रे नाम लिखैचंती बुझी होची दीटा सब्जेक्ट अच्छी बुझीला ना केते सुंदर बुझीला राइट ए पैराग्राफ देखो छ राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स 70 वर्ड रे लिखिया पड़िबो राइट ए पैराग्राफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिंग व्हिच कोर्स वाज पॉपुलर एंड व्हाई कौन कौन करिया पड़िबो लिखाई 70 वर्ड गणिबा दरकार नाही तुम्हें 70 वर्ड गणिबा दरकार नहीं 7 रु 10टा लाइन हवा दरकार 7टा रु 10टा लाइन हो गले तुम 70 वर्ड हो ओके तेणु कौन कर ना यूजिंग द इनफॉरमेशन जो इनफॉरमेशन देइछि तले मु देखौछि ओके गोटे पर गोटे जीवा इनफॉरमेशन देइछि ताकू स्टेट करके ताकू बुझेई करी कोर्स वाज पॉपुलर एंड व्हाई ताकू तो लिखिबो इनफॉरमेशन टाकू तापरे गोटे पैराग्राफ रे ओके 70 वर्ड्स रे आउ कोन लिखिबो जे को कोर्स टी पॉपुलर माने लोकप्रिय आउ काहे की लोकप्रिय ओके एटा तो टिके मनरु लिखिया पड़ियो जोड़ी की लिखिया पड़ियो देखो ए आसीगला कोन आसीगला एटा होची तमर एई भलिया टेबुलटा पडिथिबो देखो टेबुलटा को आमे देखिबा कोन टेबुलटा रे दीटा सब्जेक्ट अछि ना नाही इलेक्ट्रॉनिक्स अछि आउ सिविल इंजीनियरिंग अछि दीटा सब्जेक्ट अछि कोलाटा जोटा इलेक्ट्रॉनिक्स आउ धोलाटा जोटा सिविल इंजीनियरिंग देखि परछ गोटे कोला गोटे धोला गोटे कोला गोटे धोला नाही कि कलम अछि कोला कलम एटा धोला कलम एटा कोला कलम धोला कलम देखो केमती होची नाही कि तेणु जो धला कलमटा 1980 मसीह ओके एटा देख इयर दीची 1980 मसीह एतिक एडमिशन करथिले इलेक्ट्रॉनिक्स केते एडमिशन करथिले इलेक्ट्रॉनिक्स माने कोन कोलाटा ओके सिविल इंजीनियरिंग माने कोन धलाटा नै कि केते इजी देख इंग्रजी बहुत सहज बुझी परिबा कथा बहुत बढ़िया बुझी होची ना यस तापर देख 1990 रे माने 10 वर्ष पर 1990 रे कोलाटा देख धलाटा देख ओके सेमती किंतु ह्रास पाउछि ओके सिविल इंजीनियरिंग रो इंपोर्टेंस ता गुरुत्वता ह्रास पाउछि देखुछ 2000 रे माने 10 वर्ष पर कोन हला ना ए जो इलेक्ट्रॉनिक्स ता बहुत डिमांड हे गला नै कि ओके द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स राइट आउ सिविल इंजीनियरिंग द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग डिक्रीज डे बाय डे लिखि पारिबो केते सुंदर ना नाही तुम इंग्रजी रे चिंता करि पारिबो ओके डिक्रीज डे बाय डे and the demand of electronics the subject electronics increased day by day civil engineering केते तळे हे जाई देखो ओके एपटे देई दला वर्ष ओके एपटे दे देला नंबर ऑफ स्टूडेंट देखि परछ से सीधा रे देखिबो नंबर ऑफ स्टूडेंट केते 1980 रे इलेक्ट्रॉनिक्स रे नंबर ऑफ स्टूडेंट केते ओके एई सीधा रे देखिबो अप्रोक्सीमेटली केते हबो अप्रोक्सीमेटली सपोज कोन 600 रु कम बोली लिखिबो ओके ओके 600 रु कम बोली लिखिबो ओके तो 600 रु कम माने कोन माने 500 ओके अप्रोक्सीमेटली 500 राइट अप्रोक्सीमेटली 500 रु टिके ऊपर को ओके किमा 550 किंतु 800 होचंती के सिविल इंजीनियरिंग थिले नै कि 800 पूरा 11टा पूरा लागि 800 सिविल इंजीनियरिंग थिले नै कि तापर देखो 1990 रे पूरा 600 पिला होचंती कोन बढ़िले इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट दे इंक्रीज्ड okay in 1990 they increased to 600 right
एन लिखिदेव आउ यहाँ पूरा अधा सट हो माने कौन माने 600 700 तेणु इलेक्ट्रो जो सिविल इंजीनियरिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग दे डिक्रीज टू 700 decreased to 700 but by the way by 2000 year 2000 okay likhibo by the year 2000 what happened the electronics the students in electronics okay the enrollment in the subject electronics enrollment lekha hi okay enrollment man naam talika namo lekha so students enrolled in electronics they increased okay mane more than 800 okay increased more than 800 okay but the civil engineering students in civil engineering decreased okay up to 600 right तापर देखो 2010 रे कोन हिची 2010 रे in 2010 in the year 2010 we can see the students in the subject electronics they have you see they have increased more than 100 more than 1000 so more than 1000 students enrolled in electronics whereas the students in civil engineering decreased okay enrollment in the subject civil engineering enrollment in the subject civil engineering decreased okay decrease increase re achi kono au kichi nai re decrease increase so decrease to 400 okay so 400 तो जोटा 800 थिला इन 1980 तापर कंपेयर कर परिबो इन द ईयर 1980 the students enrolled in civil engineering enrolled in civil engineering were 800 but in 2010 we can see it became 400 yes or no but totally half he gala okay half he gala but whereas in 1980 we can see the students enrolled in electronics that they are suppose kete mane near about 550 okay but in 2010 it increased and it crossed 1000 देखि परछो देखिबा आंसर टा कोन देछि ओके मु तो मु बुझे देली एमतिया आंसर टाइम ती देछि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड आंसर टाइम ती लिखियो पैराग्राफ रे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स वाज ग्रेटर देन दोज एनरोल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स बिटवीन 1980 1990 कंपेयर करछि 1980 रु 1990 बते तुमे एमती निजो भाषा रे भी लिखि परबो निजो आईडिया रे लिखि परबो जे इन 1980 एंड 1990 द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन माने तांको नंबर टा अधिक थिला ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट ओके and the number of students enrolled in electronics increased तापरे after तुमे लिखि परिबो after to 1990 means from 2000 what happened from 2000 the students enrolled in electronics देखो कितना सुंदर students enrolled in electronics increased okay number of students enrolled in electronics increased between 2000 and 2010 okay increased and was greater than those enrolled in civil engineering okay greater than engineering students okay greater than engineering courses the number being highest in 2010 okay the course in electronics became more and more popular जेटा कहितला popular बोली कोटा को कोर्स टा popular बोली निश्चय electronics popular हे गला the course in electronics became more and more popular okay the course bus the subject electronics became more and more popular okay or the course electronics became more and more popular okay and आउ तबे लिखि दे परिबो the subject the course civil engineering okay decrease its popularity एमती भी लिखि दे परिबो ओके मनरु आसुची कंपेयर करके तमे लिखि दबो ओके डरिबार नाही बहुत इजी ओके काहे कि ना ओइंग टू द एडवांसमेंट बिकॉज व्हाई इट बिकेम पॉपुलर तमे लिखि दे परिबो निज मनरु टिके द इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स बिकेम पॉपुलर ड्यू टू advancement of technology okay like computers radios etc and the use of electronic equipment on a scale due to the use of
computers, due to use of radios, due to use of electronic equipments. Okay, so everywhere in the society, they used mobile, they used electronic equipments, they used computers, they used laptops. Yes or no? By this use, the technology became popular. Then when the technology became popular, the subject or the course electronics became popular. लिखिपर के सुंदर तापर आउ गोटे आम पढ़ा आउ गोटे कथा पढ़ा देख केते इजी देख 2011 आसला आर्ट्स रे देख द पाई चार्ट बिलो शोज द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ मिस्टर पंडा. ओके तमें एटा बिलोटा को काट देकरी एटा फर्स्ट सेंटेंस लिखिदेव. कौन फर्स्ट सेंटेंस लिखिदेव? कौन लिखिदेव? द पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ मिस्टर पंडा फ्रॉम हिज एवरी मंथ. ओके तो एवरी मंथ यही सेंटेंसटा को पूरा थोईदेव फास्ट सेंटेंस. से भाई भाव में दो उपरटा माने जेमिति दिनते देख क्वेश्चन रे गोटे फास्ट सेंटेंसटा अच्छी. क्वेश्चन रे फास्ट सेंटेंस क्वेश्चन थिला कौन थिला? द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट. एटा एटा लिख दे परिबो कौन ना एटा देख चार्टटा जेते लिखिबो तो फास्ट सेंटेंसटा ए क्वेश्चन भीतर लुचिक अछि. चार्ट the given chart लिखि परिबो. the given chart shows below लिखिबो नहीं. the given chart shows the number of students enrolled on the civil engineering and electronics courses of an engineering college. एटा एति फर्स्ट सेंटेंस ता ए क्वेश्चन भीतर अछि तमे लिखि देई परिबो. ओके सेटा गोटे मार्क तो मिली जिवो पूरा. ओके तेणु एठी अछि तेणु तुमे लिखिबो कोन एठी द पाई चार्ट बिलो लिखिबा दरकार नै. द पाई चार्ट और गिवन पाई चार्ट गिवन पाई चार्ट लिखिबो द लिखिबो ने गिवन पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ मिस्टर पंडा. माने स्पेंडिंग माने ते खर्च करंती मिस्टर पंडा केमती खर्च करंती फ्रॉम हिज सैलरी एवरी मंथ प्रत्येक मास केमती खर्च करंती. राइट ए पैराग्राफ इंटरप्रिटिंग माने कोन बुझेइकरी द इनफॉरमेशन जोटा कि दिया इनफॉरमेशन जोटा कि तत्व गुड़ा दिया जो डेटा गुड़ा दिया कंटेंट इन द चार्ट एंड चार्ट एंड स्टेट वेदर ही स्पेंड्स हिज मनी वाइजली. तेणु से वाइजली भल भाव में ज्ञान भाव में बुद्धिर सह से खर्च करती कि कुह. देख पाई चार्ट को देखीदे पाई चार्ट रे कौन अच्छी देख. ओके तुमको देखे दूँ देख एटा 40% एटा हूँ 45%. ओके एटा 45% कौन एजुकेशन खर्च करती. एजुकेशन पिला मानकर एजुकेशन 45% खर्च करती. ठीक अच्छे तापरे अधिक कोटा रेंट रे माने से जो भड़ा दियंती से भड़ा घरे रोचंती भड़ा घर पाई 22% माने पाई खर्च करती. लिखाई पूरा फूड पाई खर्च करती 22% माने खाद्य रे. तापर ट्रांसपोर्ट एपट सेपट जाती जो पकाती माने निजर बाइक हो निजर ये हो ट्रांसपोर्ट रे 9% खर्च करते. आउ एंटरटेनमेंट फिल्म देखा एंटरटेनमेंट करवा बुलाबुली करवा से 2% मात्र कौन करती खर्च करती. ठीक अच्छे तो ये आम एमती लिखिदेवा जहाँ देखुचे ता लिखा जहाँ देखुचे ता लिखा. ओके तुम्हें लिखिपर जे मिस्टर पंडा. ओके मिस्टर पंडा स्पेंड्स the most of Mr. Ponda spends 45% of his salary in education. Okay, and he has given more importance to education. Okay, and 45% of his salary is spent like ओके नहले लिखिबो ही स्पेंड्स लिखिदेबो ही स्पेंड्स. ओके इन एजुकेशन तापर जहाँ देखुच ता लिखिबो जहाँ देखिल ताहा लिखिल जहाँ देखिल ताहा लिखिल. देख 22% रेंट. ओके तो लिखिपर जे ही इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस एंड ही स्पेंड्स 22% ऑफ हिज सैलरी इन रेंट. ओके फॉर रेंट. ओके देन फॉर हिज फूड आल्सो 22% he spends 22% of his salary he spends in food. लिखिदेलो and transport लिखिदेलो कि 9%. Okay, only 9% of his salary is spent in transport. Okay, and सब बेले एटा को माने देखुच जहाँ तार लिखुच तेणु सब बेले कौन प्रेजेंट टेंस रे लिखले भल. ओके एंड 2% of his salary is spent in entertainment. ओके एटा लिखिदेव. यस तो देखा केमती कौन लिखाई देख केमती एज ए सैलरीड पर्सन. ओके आंसर टा केमती लिखा
एज ए सैलरीड पर्सन सैलरीड माने दरमा पाउछन सैलरीड पर्सन मिस्टर पंडा स्पेंड्स मु कहितली तुमको द लार्जेस्ट पार्ट it लिखि देबि परिबो द लार्जेस्ट पार्ट मिस्टर पंडा स्पेंड्स द लार्जेस्ट पार्ट माने मैक्सिमम 45% of his salary on the education मुझे कहितली 45% salary he spends on education for his children okay तापरे देखि दबो देखेंड at least okay minimum he spend the minimum amount एमती लिख दे परिबो he spends the minimum amount means 2% of his salary on entertainment okay on entertainment eta preposition ta kon labo on lagibo on entertainment on education on entertainment okay he spends an equal amount of salary 22% on house rent and on food okay so तुम कंपेरेटिव करके लिखि परिबो जे he spends an equal amount of salary 22 that is 22% on house rent and food देखलो केते सुंदर केते बहुत इजी then he spends 9% जहाँ जहाँ देखु छ लिखि दी परिबो he spends 9% of his salary on transport okay देखो एठी देखो क्वेश्चन रे तुमको दे दी छ okay क्वेश्चन रे तो तुमको सब दे दीजिए ओके एट देखो ही स्पेंड्स द चार्ट एंड स्टेट माने कुह वेदर ही स्पेंड्स हिज मनी वाइजली ओके ही स्पेंड्स एटी पाई गलो तेणु ही स्पेंड लिखि देई पळेबो किछ जदि आसु नाही मिस्टर पंडा स्पेंड्स दिस मच ए लैंग्वेज लिखि देबो ए माने टेंस रे लिखि देबो कोन सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखि देबो ओके then he spends 9% of his salary and transport okay it is appropriate to say that it is appropriate to say that it is appropriate ठीक भाବରେ माने correctly say that Mr. Ponda's spending pattern is quite judicious माने न्याय संगत quite judicious as he spends a good amount on education of his children food and houses जहाँ लिखाई क्वेश्चन लिखाई okay whether he spends his money wisely तमे एटा लिखि परिबो okay लिखि परिबो मिस्टर पंडा spends his money very wisely as he spends okay much of his salary or maximum of his salary for the cause of education or for the education of the students okay and also he is not compromising he is also spending 22% of his salary on food okay तो so Mr. Panda is spending his money wisely बोली लिखि दी परिबो तेनु एई भली भाबरे तुमको बहुत इजी जा देखिलो ताहा लिखि गिला गोटे कमेंट माध्यम रे जणैबो आउ जहा कहइबो ताहा पाठ पढिबा ओके जहा कहइबो ओके जहा डिमांड आसीबो तुम मानक ठारू सेटा हमें पढिबा तेनु भलो कि बुझिबा बुझिले तुमे करि परिबो थैंक यू वेरी मच वंदे उत्कल जननी।